My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing another decision-making set from XAT 25. Start करते हैं session. And if you've not already subscribed to our channel, then make sure to subscribe to the channel. साथ में, you can also join Telegram channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So this decision-making set is basically on KindCare Hospital that is located in the small industrial town of Chinar. So this is the basic premise of the question, and then there are 3 questions followed by it. So pause the video, solve it first yourself, then watch the solution. अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्ड प्रीमाइस है तो पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. KindCare Hospital, located in the small industrial town of Chinar, is one of the largest hospitals within 50-kilometer radius. It is well regarded among the locals for emergency services. However, for critical surgeries, they prefer to travel to the nearest city, Shamli, which is 100 kilometers away. So KindCare is basically in a small town of Chinar, and it is well known for one of the largest hospitals within 50-kilometer radius and well regarded among the locals for emergency services. So basically more known for emergency services. While for critical surgeries, they go to the nearby city, that is Shamli, for critical services, critical surgeries. When KindCare was established 50 years ago, the town was still in its early stage of development. Consequently, the hospital needed to incorporate several facilities within its premises because the town was in early stage of development, so including a 24-hour cafeteria. So it also has a cafeteria, 24-hour cafeteria, to accommodate needs of the patients and their relatives who would come from nearby places. Another facility that KindCare built and takes pride in it is its state-of-the-art testing lab. They have a 24-hour cafeteria and a state-of-the-art testing lab. It is most sought after testing lab in Chinar even today when many independent labs have come up around KindCare. So it is still most sought after. Moreover, many other facilities have also come up in the surrounding areas of the hospital, such as pharmacies, food joints, and hotels. Furthermore, a standalone pharmacy chain has gained a strong foothold in Chinar as they expanded their reach into Tier 3 cities. When it comes to KindCare, a significant portion of its patients are outpatients with a substantial number seeking emergency services. Now, outpatients are those patients who do not stay for night. Okay, they come for diagnosis and treatment, but they do not stay for night. With a substantial number seeking emergency services. So, majority services are for outpatients seeking emergency services. Okay, emergency cases like accidents and etc. As the sole 600-bed hospital in the region, KindCare plays a crucial role in medical services and receives generous funding from two major corporations operating locally, further enabling KindCare to cater to the growing medical needs of the community. During the COVID-19 pandemic, KindCare made significant investment in enhancing internet connectivity, enabling many doctors and majority of administrative staff to seamlessly work remotely. This investment also allowed KindCare to bring in doctors from other cities through remote care. So remote care is another facility now after COVID-19 pandemic, and through remote care, they've enabled many doctors to work remotely and majority of administrative staff can also work remotely. Further, COVID-19 was a wake-up call for KindCare to enhance their infrastructure. So KindCare made significant improvements. They kept the major renovations on hold due to the constant flow of patients. KindCare believes that if the health renovations are not taken up on an urgent basis now, the operations at the hospital will get obstructed. यानी कि इसके बाद में somehow remunerations की बात होगी क्योंकि एंड में यही बात हो रहा है. ठीक है. So basically KindCare is in Chinar, a small town, and it has emergency services, best known for emergency services. It has a cafeteria, a testing lab, and majority patients are outpatients seeking emergency services, and also has remote care facilities after COVID-19. This is the basic premise. Shamli is a nearby city. Okay, so first question. KindCare feels that it needs to be better prepared before a similar situation like COVID-19 chances upon the city again. The hospital decides to invest immediately in improving their infrastructure. However, this would mean that temporarily it should either reduce or shut down the operations of a few departments. ठीक है, तो रिनोवेशन तो करना है, बट द पॉइंट इज कि अगर रिनोवेशन करेंगे तो टेम्परली इट शुड ईदर रिड्यूस और शट डाउन द ऑपरेशन ऑफ फ्यू डिपार्टमेंट्स. इट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस. ऑप्शन ए, reduce their outpatient capacity to half. Option B, shut down the cafeteria for the period of renovation. Option C, ask their administrative staff to work remotely. Option D, strip the pharmacy operations down to emergency and critical medications. And option E, shut down the medical lab and arrange medical tests from a local lab. Which of the following combinations will least affect the functioning of the hospital? The question stem is saying combinations that will least affect.
the functioning of the hospital. So those particular aspects which are low impact for a medical facility, for a hospital, those should be the least affecting options. Again, so reducing their outpatient capacity by half. Now, KindCare is known for their outpatients. I mean, majority patients are outpatients only. So if they are reducing their outpatients capacity to half, this is definitely not the choice that should be taken up, because this will be affecting their functioning majorly, isn't it so? So option A should not be part of the answer. ठीक है, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बिकॉज मेजोरिटी पेशेंट्स क्या है, उनके आउट पेशेंट्स है, ठीक है, मेजोरिटी पेशेंट्स आउट पेशेंट्स सीकिंग इमरजेंसी सर्विसेज. तो अगर आउट पेशेंट कैपेसिटी कोई हाफ कर दिया तो फंक्शनिंग डेफिनेटली अफेक्ट हो रहा है और मेजरली अफेक्ट हो रहा है. सिमिलरली ऑप्शन ई, शट डाउन द मेडिकल लैब एंड अरेंज मेडिकल टेस्ट फ्रॉम अ लोकल लैब. सो दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग लैब. तो टेस्टिंग लैब एंड emergency services seeking outpatients, these are their major operations. So option A and option E, these should not be part of the answer basically, because they are their major operations. Option B, shut down the cafeteria for the period of renovation. This can be done. Why this can be done? Because cafeteria was opened, 24-hour cafeteria was opened, because the town was in early stage of development. But now you can observe, you can read that moreover many other facilities have also come up in the surrounding area of the hospital, such as pharmacies, food joints and hotels. So now joints and hotels are nearby. So even if the cafeteria is shut down, this will not be. First thing is that this is a low impact for a hospital. Cafeteria low impact है. और secondly, क्योंकि अब आसपास cafeterias हैं और बाकी options available हैं, तो definitely food joints are there. So patients or their relatives can manage their food requirements from those nearby places. तो option B को definitely choose करना चाहिए. ठीक है. Option C, ask their administrative staff to work remotely. So this will also work because they already have remote care facility. ठीक है. They already have made those upgradations during the COVID-19 pandemic. So now majority of administrative staff can seamlessly work remotely. So this can also be done. So B is right, C is right. Option D, strip the pharmacy operations down to emergency and critical medications. So pharmacy operations, since they have pharmacies nearby, that is also mentioned that they have pharmacies in nearby pharmacies, as well as a standalone pharmacy chain is also there that is gaining a strong foothold. So even if they are stripping down their pharmacy operations down to emergency and critical, तो emergency और critical तो रहेगा, पर बाकी चीज़ों के लिए if they are stripping down the pharmacy operations, that will also be fine. तो B, C and D should be the most appropriate solution and not any other option, because option A and E both are critical, both are needed, both are important for KindCare hospital. तो definitely A and E should not be part of the answer. Okay, that clear. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, KindCare needs to maintain a large inventory of medicines and other auxiliary supplies in their storage unit. The storage unit ensures adequate and timely supply to intensive care unit and emergency services. So there is a large inventory of medicines and auxiliary supplies in storage unit that they have, and that storage unit ensures adequate and timely supply to ICU and emergency. Adequate and timely supply to ICU and emergency. And both these are critical. Timely supply is needed. Delay नहीं कर सकते इसको. Okay, so and it always runs to capacity. यानी कि always runs to capacity यानी कि हमेशा इसकी capacity को भी कम नहीं कर सकते. The renovation team suggests that the storage unit be shut down for 7 days for urgent renovation. It needs to be shut down for 7 days. So that is a problem. That is a concern. Shut down for 7 days for urgent renovation. However, the hospital building being old, in the past, renovation work had stretched beyond estimated time. तो अभी तो 7 days बोल रहे हैं, but possible है 10 days, 15 days, 20 days भी stretch हो जाए. That is also possible. This is our basic premise for this question. Now the question is, which of the following actions best ensures KindCare operates efficiently during the renovation of the storage unit? तो हमारा कंसर्न क्या है? That KindCare should be operating efficiently during the renovation of the storage unit. So which one should be ensuring that, which action should be best in that regard? Option A, shut down the cafeteria until further notice and relocate the storage unit. Okay, shutting down the cafeteria and relocating the storage unit. If the cafeteria is shut down, since cafeteria is a low impact, we have already discussed in the previous क्वेश्चन, तो कैफेटेरिया को अगर शट डाउन कर दिया और फिर वहां पे रिलोकेट कर दिया स्टोरेज यूनिट को, तो क्या हमारे प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगा? क्योंकि स्टोरेज यूनिट इज फॉर आईसीयू एंड इमरजेंसी सर्विसेज. तो इफ वी रिलोकेट दैट टू कैफेटेरिया, यस, अवर प्रॉब्लम विल बी एड्रेस्ड मोस्ट प्रॉब्ली. ठीक है, तो ऑप्शन ए को होल्ड पे रखते हैं. दिस इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज ऑपरेशन हमारे एफिशिएंटली चलेंगे, इफेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज कैफेटेरिया इज लो इम्पैक्ट और ये बढ़िया लॉजिस्टिक सोल्यूशन है, लॉजिस्टिकली भी बढ़िया है. ठीक है, लॉजिस्टिकली ऑल्सो गुड.
Anyway, option B, start building a new storage facility as their capacity is already stretched. तो कैपेसिटी इज ऑलरेडी स्ट्रेच, सो स्टार्ट बिल्डिंग अ न्यू स्टोरेज फैसिलिटी. हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बता रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिनोवेशन ऑफ द स्टोरेज यूनिट के टाइम पे एफिशिएंटली कैसे मैनेज करेगा, वो कोर्स ऑफ एक्शन हमें चाहिए. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट एक नई फैसिलिटी बनाते हैं. नाउ न्यू स्टोरेज फैसिलिटी विल बी टेकिंग टाइम. ठीक है, दिस विल कंज्यूम टाइम, डिले करेगा, फर्दर डिले हो जाएगा. और डिले सिर्फ डेज में नहीं होगा, इट माइट बी इन मंथ्स और इवन फॉर अ ईयर, बिकॉज अ न्यू स्टोरेज फैसिलिटी विल बी टेकिंग टाइम. इजंट इट सो? तो अभी हम बात कर रहे थे हफ्ते 10 दिन 15 दिन का, और इंस्टेड एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि एक नई स्टोरेज फैसिलिटी बना दे और वहां पे क्योंकि कैपेसिटी स्ट्रेस है. तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम, दिस इज क्रिएटिंग अनदर. तो डेफिनेटली नॉट द आंसर. We need problem to the immediate solution, renovation of the storage unit, and how KindCare can operate efficiently during that time. Option C, shut down the hospital until further notice, except for the emergency ward, which can run on outside supplies. Shut down the hospital, extreme and harsh step. कि ऑपरेशन ऑपरेटिंग एफिशिएंटली डज नॉट मीन कि जीरो कर दिया, जीरो डाउन कर दिया, सारे ऑपरेशन ही खत्म कर दिए. ऑप्शन सी, एब्सोल्युटली नॉट. ऑप्शन डी, रिनोवेट द स्टोरेज यूनिट पार्ट बाय पार्ट while having the capacity of the emergency services until the renovation completes. तो रिनोवेट द स्टोरेज यूनिट पार्ट बाय पार्ट. ओके, होल्ड पे रखते हैं फिलहाल. ऑप्शन ई, रेंट अ लार्ज स्पेस अबाउट 1 hour अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल फॉर 7 days. नाउ क्या ये फीजिबल होगा? इज दिस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन? थिंक अबाउट इट. Absolutely not, because you are renting a large space for storage unit, and storage unit is majorly for ICU and emergency services which need immediate solution, लेकिन immediate timely supply. तो कैसे मिलेगा जब you are renting a large space about 1 hour away from the hospital? So this is definitely impractical. Logistically is also inefficient, but otherwise also impractical. So this is wrong on two grounds. This is impractical and logistically inefficient as well. कि जब भी कोई जरूरत पड़ेगा मेडिसिन का तो यू विल बी गोइंग 1 hour away, है कि नहीं? दैट इज लॉजिस्टिकली वेरी इनएफिशिएंट एंड इम्प्रैक्टिकल. ऑप्शन डी, रिनोवेट द स्टोरेज यूनिट पार्ट बाय पार्ट while having the capacity of the emergency services. Now emergency services are the most sought after services for this hospital, so having that capacity is not how efficient operation is done. तो डेफिनेटली ऑप्शन डी एंड ए में बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट शट डाउन द कैफेटेरिया अंटिल फर्दर नोटिस एंड रिलोकेट द स्टोरेज यूनिट टू कैफेटेरिया, सो दैट वे हॉस्पिटल कैन ऑपरेट एफिशिएंटली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज storage unit is just shifted inside the hospital to cafeteria only, and operations can run to capacity without any problem. Isn't it so? तो ऑप्शन ए इज बेस्ट ऑप्शन. और एक और बात ऑप्शन डी के साथ में कि ऑप्शन डी में अगर हम रिनोवेशन को पार्ट बाय पार्ट करते हैं, ऑलरेडी रिनोवेशन की वजह से प्रॉब्लम होगा, बिकॉज रिनोवेशन मे स्ट्रेच फ्रॉम 7 days to 10 days 15 days, और पार्ट बाय पार्ट करोगे सो दिस विल फर्दर डिले टू मे बी 30 days 40 days, है कि नहीं? और भी डिले होगा. नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, नंबर तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इट विल फर्दर डिले द ऑपरेशंस. ठीक है, फर्दर डिले द रिनोवेशंस, तो नो पॉइंट कि डिले को और इंक्रीज कर रहे हो तुम. और जितना डिले इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा ऑपरेशंस विल बी अफेक्टेड, ऑप्स विल बी अफेक्टेड. तो ए इज बेटर ऑप्शन. रिनोवेशन को फटाफट से खत्म करो, वापस से कैफेटेरिया से शिफ्ट कर लो सारा स्टोरेज यूनिट पे. तो ए इज द बेस्ट ऑप्शन अमंग द गिवन ऑप्शंस. अगला क्वेश्चन, KindCare Hospital has to renovate its storage unit. Given the complexity of the medicines and the need to store other critical supplies, renovation is supposed to take 7 days. However, as the work starts, the team interested with the work realizes that the work will take more than 15 days. तो 15 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा. KindCare feels that even this revised estimate is modest, यानी कि it might take some more time. Already the outpatient services are affected and people visiting the hospital are being turned away. Stretching it further will attract a strong public resentment. तो concern क्या है इनका? Outpatient services are affected, OP services are affected, and due to this, people visiting the hospital are being turned away. Patients are turned away, and hence it further will attract, stretching it further will attract a strong public resentment. So that is the concern. Strong public resentment will imply that loss of reputation to the hospital and loss of revenue तो हो ही रहा है रोज. डेली रेवेन्यू लॉस तो हो ही रहा है. विच आर द फॉलोइंग एक्शंस ऑफर्स द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर KindCare टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेशेंट्स बीइंग टर्न्ड अवे? हमारा एजेंडा क्या है इन दिस क्वेश्चन? हमें वो सॉल्यूशन चाहिए, द सॉल्यूशन दैट इज मोस्ट सस्टेनेबल फॉर KindCare टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेशेंट्स टर्न्ड अवे, बीइंग टर्न्ड अवे, यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बीइंग टर्न्ड अवे कम हो जाए, जल्दी से जल्दी कम हो जाए और सस्टेनेबल भी हो साथ में. Bring in a reputed renovation team at triple the cost, which guarantees to finish the work
इन 3 days। तो कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिलहाल इसको होल्ड पे रखते हैं। ऑप्शन बी, रिज्यूम सम ऑपरेशंस फ्रॉम रेंटेड स्पेसेस स्कैटर्ड अराउंड द रीजन। तो बहुत सारी रेंटेड स्पेसेस ले लो स्कैटर्ड अराउंड द रीजन और वहां से फिर रिज्यूम करो अपने ऑपरेशंस को। तो क्या ये चीज़ सस्टेनेबल होगा? क्या ये सॉल्यूशन है, लॉजिस्टिक सॉल्यूशन है प्रॉपर? क्या सस्टेनेबल होगा और क्या लॉजिस्टिकली सही होगा? इवन इन दैट केस, इफ यू आर resuming your operations from many rented spaces scattered around the region, this will be highly confusing for patients। कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। ठीक है, तो इन एनी केस लॉस ऑफ रेपुटेशन होगा यहाँ पे और कंफ्यूजन होगा, कहाँ पे कौन सा पेशेंट जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और तुम एनी वे टर्न अवे करोगे बहुत सारे पेशेंट्स को। तो दिस इज नॉट सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। सस्टेनेबल की तो बात ही नहीं है। ऑप्शन सी, स्टार्ट रिड्यूस्ड ऑपरेशंस ग्रेजुअली एंड हायर अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू फाइंड वेज टू एक्सपर्टाइट द रिनोवेशन। सो अभी हमारा कंसर्न क्या है? इमीडिएट कंसर्न क्या है? इमीडिएट कंसर्न यही है कि already the outpatient services are affected and people visiting the hospital are being turned away. Stretching it further will attract a strong public resentment. And by choosing option C, you are again starting operations gradually. Start reduced operations gradually. ठीक है, तो reduced operations को you are starting gradually, but hiring a team of experts. So this will take time. These things will take time, uncertain and further delay. और साथ में डिले तो होगा ही। तो डिले को और बढ़ा रहे हो, और डिले को बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली क्या होना है? पब्लिक रिजेंटमेंट होगा, लॉस ऑफ रेपुटेशन होगा, सारा तामझाम होगा। तो ऑप्शन सी इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन डी, अरेंज विद लार्जर हॉस्पिटल इन शामली टू टेक ओवर देयर क्रिटिकल पेशेंट्स। ठीक है, अरेंज अ लार्जर हॉस्पिटल विद इन शामली टू टेक ओवर क्रिटिकल पेशेंट्स। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इज आउट पेशेंट्स, बिकॉज आउट पेशेंट्स आर मेजर पेशेंट्स दैट आर ट्रीटेड एट किंड केयर हॉस्पिटल। तो उनके बारे में तो बात ही नहीं हो रहा है, और उन्हीं को तो टर्न अवे कर रहे हो। तो सारा का सारा सब कुछ रहा, तुम सॉल्व क्या प्रॉब्लम कर रहे हो? क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और प्रॉब्लम सॉल्व करना आउट पेशेंट्स के लिए क्या ये मेक सेंस करता है? बिल्कुल नहीं मेक सेंस करता है, कोई पॉइंट ही नहीं ऑप्शन डी का। ऑप्शन ई, स्टॉप द रिनोवेशन वर्क इमीडिएटली एंड रिज्यूम नॉर्मल ऑपरेशंस। ठीक है, स्टॉप कर दो रिनोवेशन को और रिज्यूम नॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उस प्रॉब्लम को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए और ई में से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना है, वेदर ए या फिर ई। अब ई में क्या है, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुआ, डिले कर दिया हमने उसको, इजंट इट सो? तो ई में हम डिले कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को। हाँ, एक चीज जरूर होगा कि इफ वी आर ऑप्टिंग फॉर ई, स्टॉपिंग द रिनोवेशन वर्क इमीडिएटली एंड रिज्यूमिंग नॉर्मल ऑपरेशंस, देन डेफिनेटली दैट वे आवर आउट पेशेंट सर्विसेज विल नॉट बी अफेक्टेड। बट द क्वेश्चन इज इट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन between A and E? Is E a sustainable solution? तो E is not a sustainable solution, not sustainable। बट फिर ए में कंसर्न आ रहा है कॉस्ट का, तो ए और ई में से किसको चूज करें? ठीक है, ई सस्टेनेबल तो नहीं है, बिकॉज ये हो जाएगा कि हाँ अभी के लिए हमारा आउट पेशेंट सर्विसेज विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ई। ए में हम क्या करें? ब्रिंगिंग इन अ रेपुटेड रिनोवेशन टीम एट ट्रिपल द कॉस्ट विच गारंटीज टू फिनिश द वर्क इन 3 days। बट एक बार हमारा 3 दिन में वर्क फिनिश हो गया तो इसके बाद में अवर आउट पेशेंट सर्विसेज विल एब्सोल्युटली नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, तो काम फटाफट फिनिश हो जाएगा। तो ए में हमारा क्या हो रहा है? कॉस्ट इज द कंसर्न, कॉस्ट इज द कंसर्न। बट वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एक तो हो गया ए में ट्रिपल द कॉस्ट इन our renovation work, but that will save our daily revenue loss, because यहाँ पे additional cost भी तो हो रहा है हमारा। और क्या cost है हमारा? Daily revenue loss is also a cost, and that is also a cost in money। Then additionally reputation loss is also there, that is not a money cost, but that is also a cost, है कि नहीं? So these two costs are also there। So between A and E which should be chosen, because E is not a sustainable solution। ठीक है, E is also a solution but not a sustainable solution। और वहां पे हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसको तो हमें खत्म ही कर दिया, कि बात करें डिले कर दिया कि बाद में सॉल्व करेंगे, बट दैट इज ऑल्सो नीडेड। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा पोस्टपोन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन कह भी रहा है लास्ट में कि KindCare believes that if the health renovations are not taken up on an urgent basis now, the operations at the hospital will get obstructed। So they will anyway get obstructed sooner or later, because building उनका पुराना है। So that is why this solution also has to be handled। ठीक है, सो हमारे between A and E we must be choosing A, option A, because renovation cost is definitely less than the revenue loss that is happening daily, because that will be reduced agar if 5 or 10 days are saved because of this renovation, then definitely that revenue loss will not be happening for those 5-10 days। Additionally, reputation loss will also not be there, so that reputation cost plus revenue loss is much higher than the renovation cost। So in that case we'll be choosing option A and not option E, because option E is not sustainable solution। This is only running away from the problem, isn't it? So क्या ये appreciate कर पा रहे हो? So this is all the discussion on this particular case। I believe कि सारे के सारे problems को सारे questions समझ में आएंगे, and if there is any doubt whatsoever still in any of the questions, then make sure to comment about that
पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो, एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। Okay, that is all for this session. Bye bye. Take care and keep learning. Next session, we will be doing another set. Okay, take care.